थोड़ा सा ठीक कर दो See guys, this is my one EC2 instance. This is my another EC2 instance. We have root volume attached to both the instances. Okay. So this is EC2 1. This is EC2 2. Okay. Point is that this machine is running in AP South 1A. This is running in different data center AP South 1B. Okay. And now we have a extra EBS attached. Not one, we have two extra EBS attached. Okay. Now the point is that I want the data stored in these EBS. Okay, I want data stored in these EBS should be accessible at this EBS. Okay, I want to use these storage or these whatever we are storing in these EBS, whatever the data XYZ, I want to attach at this EBS. But condition is that this EBS should not detach from this location. वो यहाँ से हटनी नहीं चाहिए. ओके, वो यहाँ पे भी वो डेटा एक्सेसिबल होना चाहिए, वो डेटा वहां पे भी क्या होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए. ओके, दिस इज द पॉइंट. सो नाउ व्हाट वी कैन डू, द पॉइंट इज दैट जो ईबीएस है ना वो एक जोन में ही काम करता है. मतलब आप इन वॉल्यूम्स को जोन के बाहर नहीं ले जा सकते, क्योंकि और as far as if I talk about EBS is concerned, it is a zone based service. अपन उसको सिर्फ जोन्स में ही रोटेट कर सकते हैं, यानी एक जोन में एक मशीन से डी अटैच करके दूसरी मशीन पे अटैच कर सकते हैं. बट पॉइंट इज दैट यहाँ पे वो सिनेरियो अलग चल रहा है. देन हाउ वी कैन deattach the EBS, or how we can transfer the EBS from this zone to another zone. That is a challenge. Okay, so for that, what we can do, okay, we'll take a backup of these EBS or of these volumes. Okay, what I will do, I'll make a clone. Okay, what do you mean by clone? Clone is like a copy. Okay, I'll make an exact copy of these volume. Okay, so for that, AWS is giving us one service. Okay, इसके लिए आपको AWS एक सर्विस यहाँ पे दे रही है जो आपको इन वॉल्यूम्स का, ओके, if you have two EBS, you want to make a copy, तो वो उन टू वॉल्यूम्स का एक कंबाइन करके एक सिंगल क्या बना सकती है, वॉल्यूम बना सकती है, मतलब सिंगल कॉपी बना सकती है. ओके, और इस कॉपी को ये यहाँ पे टर्म दे रहे हैं that is meaning of snapshot. We have what? We have one point that is known as what? Snapshot. They are making an exact copy of these volume. That is known as what? Snapshot. Okay. And the best part of this snapshot is that we cannot only transfer this snapshot. For example, I have created, these are the two volumes, these are the two EBS. I have created one snapshot of those volumes. Okay, I have created the snapshot of those volumes. The best part is that we can
transfer into the different regions as well. Okay, into the different accounts as well. Okay, means point is that ये जो other EC2 instance है, okay, it doesn't matter it is running your in your account or in a different account, doesn't matter. Okay, so इस snapshot basically आपको सर्विस क्या दे रही है? ये snapshot आपको एक कॉपी बनाने की सर्विस दे रही है कि आप EBMs की वॉल्यूम्स को क्या करा सकते हैं, कॉपी करा सकते हैं और इंटरनली उनको क्या कर सकते हैं, डिफरेंट जोन्स में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं. ओके, सो पहला ऑप्शन सेम अकाउंट है. ओके, सेम रीजन. ओके, इसको आप कहाँ सेम अकाउंट सेम रीजन में भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं. दूसरा ऑप्शन सेम अकाउंट बट डिफरेंट रीजन. Okay, now the third choice is different account है. Okay, same reason है and different account, different reason. Okay, ये चार कैटेगरी अपने पास होती है. ठीक है, पॉइंट यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि आपका जो भी सिनेरियो, चाहे आपकी वो EC2 इंस्टेंस, ओके, चाहे आपके वो EC2 इंस्टेंस एक ही अकाउंट पे हो, रीजन डिफरेंट हो, माइट बी इट इज रनिंग इन नॉट इन साउथ एशिया पैसिफिक मुंबई, दे आर रनिंग इन सिंगापुर. ओके, account is maybe different, this is account A1, this is account 2, so different account and different reason. Okay, so now if you want to transfer this data to the other EC2 instances, what you will do, you will make a snapshot, okay, of those EBS. It will give you one single snapshot and you can transfer that snapshot in this four options. These are the four different options. Hello, sir. Where you can transfer. Yes, Neha. सर आपका वॉइस चॉप ही था अभी 5 मिनट 2-3 मिनट पहले से. ओके, आवाज नहीं आ रहा है आपको? ओके, आशीष, पुनीत, यू गाइस आर नॉट एबल टू. सर मैं एक बार वापस से ज्वाइन करती हूँ. यस सर, अभी क्लियर है बट थोड़ी देर पहले आ रहा था. अभी वो आ रहा था. थोड़ी देर पहले वॉइस ड्रॉप हो रही थी. क्लियर आ रहा है, some people say क्लियर आ रहा है. Let me verify. ठीक है, I hope you guys can hear me because मेरा latency आ रहा है 40 की नीचे, आवाज प्रॉपर आ रही है. Make sure guys your internet is running at a good speed. All right. So यहाँ पे पॉइंट ये बात हो रही थी कि ये स्नैपशॉट हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट रीजंस डिफरेंट अकाउंट्स पे काम कर सकते हैं. ये चारों ऑप्शंस में हम कर सकते हैं. स्नैपशॉट दे क्या रहा है आपको, एक कॉपी बनाने की क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है, जिसको क्योंकि EBS को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते. EBS के अंदर जो डेटा है, जो स्टोरेज है, उसको अपन ट्रांसफर नहीं कर सकते. तो अपने पास क्या है, सर्विस है स्नैपशॉट. स्नैपशॉट को यूज करके आप उसे क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो. बात आई समझ? चलिए. Okay, and the point is that this snapshot is not working on zone based, it's a region based service. Okay, ये क्या आपकी रीजन पे काम करे, जोन पे काम नहीं करे. बात आई समझ? चलिए, so let me रीजन जो आप स्नैपशॉट बनाओगे ना, वो उस रीजन में ही अवेलेबल हो. बनाया आपने, ठीक है, हाँ, अब वो मुंबई में बनाया तो अब आप उसको वो ये चारों ऑप्शन यूज कर सकते. अब उस EBS जो स्नैपशॉट बनाया ना, वो डिफरेंट रीजन, सेम रीजन है तो कोई ट्रांसफर करने की जरूरत ही नहीं है. आप डायरेक्टली वॉल्यूम बना दोगे उसी रीजन में.
डिफरेंट रीजन होगा तो आप कॉपी वहां ट्रांसफर करोगे उसको। अगर डिफरेंट अकाउंट है तो डिफरेंट अकाउंट और उस रीजन को सेलेक्ट करोगे जहां पे आपको ट्रांसफर करना है। डेटा सेंटर, तीनों डेटा सेंटर एक सिटी में आते हैं, उसको अपन रीजन बोलते हैं। उसमें तो हम जोन नहीं बदल रहे थे, उसमें तो स्नैपशॉट ही लग रहा है। कहाँ पे जोन अभी तक अपन ने कहाँ बताया, स्नैपशॉट पढ़ा ही नहीं अभी अपन। आपने जो टास्क दिया था तो बेटा वो दिया इसलिए था ताकि इस सर्विस को पढ़ा कर लिया, अच्छी बात है। अब देखो उसमें क्या होता है, जिन्होंने नहीं किया वो ये था, मैंने आपको एक्स्ट्रा टास्क दे दिया था कि आप थोड़ा आगे पहले ही थोड़ा पढ़ के आ सकते हैं। तो जो कल मैंने आपको एक लैब दी थी वो क्वेश्चन स्नैपशॉट से आपका क्या होगा, सॉल्व होगा। यू हैव टू वर्क फॉर द स्नैपशॉट सर्विस। Okay, so what we can do, yesterday might be we have data in server 4. Okay, I think we have two storage attached with it. Server 4 or server 3. I think I have deleted that storage. Okay, so what I'm doing, I'm starting one of the service, one of the instance I'm starting. Okay, any idea, guys? Which hypervisor AWS is using to virtualize their hardware? No question, hypervisor. कौन है इनका वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर जो इनको हार्डवेयर वर्चुअलाइज करके देता है, वो कौन है? पता कीजिए। चल, तो इस पे एक वॉल्यूम क्रिएट करूंगा 2 GB की। ओके, और फिर वो 2 GB की वॉल्यूम को अटैच करूँ। बट गाइस लेट मी क्लियर यू, ईबीएस में आपको कितने अमाउंट ऑफ स्टोरेज मिल सकता है? ओके, मिनिमम आपको मिलता है, अगर मैं बात करता हूँ GB2, जनरल पर्पस 2, वो आपको मिनिमम 1 GB दे रहा है, मैक्सिमम कितना दे रहा है, टेराबाइट। इससे ज्यादा आप नहीं सर, बिकॉज इट्स अ ब्लॉक सर्विस, ब्लॉक स्टोरेज। मेजर जो आता है ना हमारा डेटा, वो मोस्टली कहाँ बैकअप करके कहाँ स्टोर कर दिया जाता है, पीछे स्टोरेज, हार्ड डिस्क। ओके, तो ब्लॉक स्टोरेज में हम इतना डेटा नहीं रखते, बैकअप के लिए उसको ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, फ्री आपका 30 GB है ना, पता रखा, 30 GB आपका फ्री है। ओके, जनरल पर्पस 2 में 1 GB है, जनरल पर्पस 3 में आपका क्या है, मिनिमम 4 GB और मैक्सिमम क्या है, 16 TB। देन प्रोविजन आईऑप्स एसएसडी है, उसमें आपका मिनिमम 4 GB है, वही मैक्सिमम क्या है, 16 TB। ओके, शायद ये आपका जनरल पर्पस में ये है, 3 में ये, IO1 में क्या है, 4 है, सॉरी जनरल पर्पस में भी मैंने आप 1 ही। ओके, ये आप देख सकते हैं प्रोविजन आया उसमें 4 GB है, ठीक है। और अगर आप SSD HDD लेने जाते हैं तो देखो, HDD आप परचेस करते हो, लॉजिक सी बात है कि आप 2 GB के हार्ड डिस्क परचेस करते हो नहीं ना, कितने, मिनिमम 500 GB, 1 TB, इतने है ऑब्वियसली। तो कंपनी में अगर परचेस करेगी तो उसको ऑप्शन नहीं दे रहे कि आप 2-4 GB लो, क्योंकि ये जो SSD आपको देते हैं ना स्टार्टिंग में ओएस को बूट कराने के लिए, ओएस को बूट कराने के लिए 20-30 GB भी बहुत है, 50 GB भी बहुत है, डिपेंड्स ऑन वर्क, टेस्टिंग के लिए कर रहे हो तो आप 10 GB भी आपके लिए इनफ है, 8 GB भी क्या है, इनफ है।
ठीक है, लेकिन आप एचडीडी लेने जा रहे हो, इसका मतलब आप बैकअप क्रिएट करने जा रहे हो। तो बैकअप क्रिएट करने के लिए आप ऐसा तो नहीं कि 100 जीबी या 50 जीबी या 10 जीबी लोगे, तो दे आर गिविंग यू मिनिमम, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 125 टू 16 टेरा। ये SC1 है, और ST1 का शायद इन्होंने अभी रिड्यूस कर दिया है, पहले 500 हुआ करता था, अब अभी इन्होंने मिनिमम क्या कर दिया है, 125 कर दिया। ओके, आज से कुछ आप 1-1.5 साल पहले देखेंगे तो यहाँ पे 500 तक ही वो मिनिमम से मिनिमम देते थे अभी तक, बट रिसेंटली इन्होंने इसको क्या किया, चेंज किया अभी 2 से 3 मंथ्स पहले। ओके, चलिए। ये SSD पेड, 30 जीबी तक आप कोई से भी यूज करोगे फ्री, 30 जीबी से ज्यादा आपने यूज किया, यू हैव टू, डिपेंड्स ऑन द, वैसे इसका डॉलर प्राइस आप पता कर सकते हो। हाँ, आप बिल जनरेट हो रहा है, जनरेट नहीं होता, पर बिल डैशबोर्ड हाँ हाँ, $4 तो आप बिलिंग डैशबोर्ड पे आप जाओगे तो आपको सारा वहाँ पे दिखेगा। ठीक है, नहीं आपको एक वेबसाइट दे रखी है आपको AWS ने, AWS की खुद की वेबसाइट है, AWS प्राइसिंग कैलकुलेटर। ओके, बट ये हमारा काम नहीं, वी आर द टेक्निकल पर्सन्स, वी डोंट हैव टू वर्क ऑन दिस, बट ये एक प्राइसिंग कैलकुलेटर है जिसको आप यूज कर सकते हो, AWS वेब सर्विस सिंपल कैलकुलेटर। यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, जैसे आपने कौन सी सर्विस यूज करी, EC2 किस यूजन में, यहाँ पे ओके EC2 यूज करी, क्या आप हार्डवेयर परचेस करते हो, क्या आप EBS परचेस कर रहे हो, कितनी परचेस कर रहे हो, मैंने बोला एक परचेस कर रहा हूँ, कितने जीबी की, 1 GB की जनरल पर्पस SSD, बेस लाइन 128 का मिलेगा आपको, इसका कॉस्टिंग आपको कितना आएगा, यहाँ पे ऊपर बताएगा ये, अभी क्या आ रहा है 0, क्योंकि 30 GB तक ये क्या देते हैं, फ्री दे रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे 30 GB, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे 100 GB ले लेते हो, GB पर 1, please give me a minute, let me change my network, give me a minute. I hope guys now you are able to hear me properly. अभी अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? Am I clear? Okay. Yes, sir. Yes, sir. All right. So $7, okay. और आप 50 GB देने जाएंगे, $2 आपको देने, आप 10 GB देने जाएंगे, इस तरीके से आपका प्राइसिंग कैलकुलेटर स्टार्ट होता है। 30 GB आपको फ्री देते हैं, 30 GB के बाद आपका पैसा देना स्टार्ट। ठीक है, अगर देखिए मैं इलास्टिक IP की भी बात करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि मैंने नंबर ऑफ इंस्टेंस पर IP अटैच कर रखे, कितने, एक एक इंस्टेंस है और एक IP है मैंने अटैच कर रखा है। फिर मैं इसको एक बार हटाना चाहूँगा, आप देखेंगे मुझे ₹0 लगा, ठीक है, लेकिन इंस्टेंस एक है, ठीक है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ IPs मैंने कितने परचेस कर रखे हैं, फॉर एग्जांपल, और या अगर मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ आवर्स ईच IP is attached to running EC2 instance is 15 आवर्स। ओके, तो एक है तो ये आपसे पैसा नहीं लेंगे, लेकिन द नंबर ऑफ इलास्टिक IP इज एसोसिएट विद स्टॉक EC2 इंस्टेंस और अनअटैच्ड, कितने घंटे, मान लो 15 घंटे आपने रख लिए, 15 घंटे के अकॉर्डिंग आपको $0.8 का अमाउंट आपको देना पड़ेगा। ये चीज मैंने उसी दिन बता दी थी, यू हैव टू वर्क ऑन इट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा, अगर आपने 15 घंटे लिए
15 घंटे के अकॉर्डिंग आपको $0.8 देने पर। ओके, चलिए, तो ऐसा कुछ सिनेरियो चलता है। यहाँ पे पूरी आपकी वेबसाइट है, आप इस पे अपनी प्राइसिंग कैलकुलेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस। ओके, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। आपको आना है, आप अपनी प्राइसिंग कैलकुलेटर देखना चाहते हैं, आप इस वेबसाइट पर आइए, इस पेज पर आइए, calculator.s3.amazon.aws.com। आप यहाँ पे आके अपनी चीज़ों पे काम कर सकते हैं। Let's move on back to our lab. So I'll create a volume of 2 GB in AP South 1A. I hope so. Server 1 is running in AP South 1A, and let me attach that volume with server 1. Okay, and now I am having some data in the server 1. Let me connect. LS block, you can see MKFS. Okay, and MKDIR D1 mount /dev/xpdf /root/d1। तो फोल्डर मैंने रूट पे बनाया था, माउंट हो चुका है, आप देख सकते हैं 2 GB का, लास्ट में आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे रूट पे जा रहा हूँ D1 पे। ठीक है, यहाँ पे एक फाइल बना रहा हूँ कितने GB की, 1 GB की मैं फाइल बना रहा हूँ टेस्ट। देख सकते हैं आप 1 GB की क्या बन चुकी है, फाइल बन चुकी है। ठीक है, और अब देखेंगे 50% स्टोरेज फुल हो चुका होगा। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, एक और मेरा मशीन चल रहा है। ओके, एक और मेरा मशीन चल रहा है। लेट्स लॉन्च वन मशीन इन सिंगापुर। गाइस, उनकी एक ये टेस्टिंग वेबसाइट भी है जो आपको लेटेंसी चेक करवाती है। ओके, लेटेंसी का मीनिंग दोस्तों गाइस डोंट नो। लेटेंसी का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे आपका बेसिकली आप एक सिस्टम से गूगल पे जा रहे हैं। ओके, तो आपके सिस्टम से एक पैकेट जनरेट कर होता है। उस पैकेट को यहाँ से गूगल तक जाने में और गूगल से वापस आने में टाइम जो लगता है, उसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, लेटेंसी। तो इन्होंने एक वेबसाइट बना रखी है cloudping.info, जिनमें ये क्या करेंगे, अपने हर डेटा सेंटर का क्या करेंगे, लेटेंसी चेक करें कि जिसकी लेटेंसी कम होगी, दैट मीन्स that will be the right point for you guys. You can take a decision that we have to launch this machine over here because this is the nearest data center. I'm doing an ping. So वर्जीनिया में पहुंचने के लिए 275 मिली सेकेंड्स का टाइम लग रहा है मेरे इंटरनेट को। ओके, so Brahim we get the lesser 115 millisecond. Mumbai we are getting 119. It's too much right now. See guys, it's almost lesser than Brahim. What about Singapore? Singapore we have 179. Okay, so latency is coming very high, guys. Okay, it should not have this type of high latency. This latency is very large right now. Okay, so you can see Brahim is the nearest one which is responding very fast. Okay, but see, it's okay, guys. Just showing you for the testing purpose. If you want to check the latency of your uh, data centers, you can go on cloudping.info, make a check. It's just a basic tool, guys. Nothing great in that. Okay, so now you will see I'll go here and I'll launch one instance, start one instance. So machine has been started. So now
What I will do, again, I'll go to Mumbai. My instance is running. My instance is running. So what I will do, I'll go on snapshots. Okay, मैं क्या बनाऊंगा उसका कॉपी बनाऊंगा तो इसके लिए मैं snapshot service पे जाऊँ. Okay, so he is saying you don't have any snapshot in this region. Okay, so I'll say create a snapshot. Okay, point ये है कि आपको volumes का snapshot बनाना है या आपको instance का snapshot बनाना है. I'll say I want to make a snapshot of particular volume. अब volume और instance में difference क्या, ध्यान से इस difference को आप देखिए. अगर मैंने बोला इस पे 5 EBS अटैच है, ठीक है, मुझे इस EBS का ही क्या करना है, स्नैपशॉट बनाना है. सो आई टेक अ वॉल्यूम EBS स्नैपशॉट. लेकिन मैंने बोला मुझे जितनी भी EBS है उन सबका बनाना है, देन आई टेक अ व्हाट, इंस्टेंस स्नैपशॉट. बात आ रही है, इसमें सब EBS का क्या आ जाएगा, स्नैपशॉट आके एक सिंगल कॉपी बन, इंक्लूडिंग द रूट. बात आ रही है समझ में. वापिस हमें क्रिएट करना. ओके, बट यू डोंट हैव टू क्रिएट द, मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में पहले 12 GB या 100 GB का बना दिया, फिर आपने एक और EBS अटैच किया 50 GB का, उसमें और 50 डेटा GB का स्टोर हुआ है, तो आप फिर से फ्यूचर में इंस्टेंस वॉल्यूम बनाने जाओगे, अगर इंस्टेंस से EBS इंस्टेंस से स्नैपशॉट क्रिएट करने जाओगे, मतलब पूरे इंस्टेंस का स्नैपशॉट क्रिएट करने जाओगे, सो यू ऑलरेडी हैव 100 GB विद यू, सो इट विल नॉट क्रिएट अ 150 GB, इट विल क्रिएट द रिमेनिंग 50 GB. रिमेनिंग 50 GB का वो स्नैपशॉट क्रिएट करना. दैट इज द वर्किंग ऑफ, दैट इज नोन एज इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट. जैसे जैसे आप नए नए डेटा को स्टोर करते जाओगे, तो ये इनका फीचर है कि ये उसी स्टोरेज का क्या करेंगे, स्नैपशॉट बनाएंगे, प्रीवियस डेटा का स्नैपशॉट नहीं बनाएंगे, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव. ओके, एंड AWS डोंट वांट दैट देयर कस्टमर पे फॉर द अमाउंट, ओके, व्हिच वी ऑलरेडी हैव. एक ही डेटा को अगर आप 50 बार करोगे, इसका मतलब ये नहीं कि 50 बार पैसा दें. ओके, जैसे जैसे नई नई चीजें ऐड होती जाएगी, आप उतना हम स्नैपशॉट लेते जाएंगे, उतने अमाउंट पे. दैट इज नोन एज इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट. ओके गाइस, एनी डाउट? It depend on their environment. We don't, you can say 2 to 4 minutes, 2 to 5 minutes approximately. Okay, they have the best hardware, so they have the SSDs behind the part. So as far as time, I will not give you the fixed amount range. It's totally depend on their end, because this is the things which we cannot control. Okay, we can give the instruction to the console, it will create by them, but yeah, they will make a snapshot in very less time. So we will take a volume snapshot, but make sure guys you know the volume ID. The point is that we don't know the volume ID, so it's always good to give a tag to those volumes as well. Okay, for your betterment. Those are things guys. Are you able to understand me what I'm trying to explain? Yes, sir. Okay. So now I'll go on a snapshot. Create a snapshot. I'll take a volume, and now I'll see. Let's refresh it. Yes, this testing B1. So I have selected this one, testing EBS. Now I'll write the description. It's optional thing, guys. You have to write it. You can write it. It's always good to give us tag to a snapshot as well. I'll give a name, key as a name, and I'll give a value as a, you can say, for test environment. Okay, or I can give the name like ENV. ENV means your environment is testing environment. Value I'm giving testing. Okay, create a snapshot, close it. So now guys, they are creating a snapshot of 2 GB. Already 39 is in progress. Let me take a refresh.
And you will see, guys, might be they have created 100% snapshot. You guys, it's 39% in progress. So in some milliseconds, you will able to see, or in some seconds, you will able to see. Status is pending. Now the point is that you cannot attach the snapshot directly, or sorry, you cannot attach the or you cannot access the snapshot directly. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस snapshot को किस में convert करना पड़ेगा, volumes. Okay, so this is a point. Okay, you can transfer the snapshot across the regions and all those 4 options, but you cannot access, or EC2 cannot access the snapshots. For that, they have to create a volumes, and then volumes will be going to mount it on that. Think like a pen drive you have. Think in your mind, think like a pen drive. If you want to access the data, what you do, you attach, you mount that pen drive on your system. Then you can access that data. Okay, so same way, you also have to create a volume. Okay, for that, let me refresh this page. So now what I will do, I'll create a volume from that part. Okay, I think I've seen 100% here, then why again? Hmm. चेक हो सकता है, latency check क्यों नहीं कर सकते? You can ping the China websites. Okay, you can ping it, no issues. Okay, you can launch the things in the all the regions, but you will not able to launch the region, because as per as the policies of different countries, governments, we don't allow to launch the things which is running in Indian market in the China. That is the point. Every government has their own set of rules. Okay, the point is that China don't allow those people. Okay, or if they want to allow, they should have the access of some data from you guys. That is the point like that. Okay, ping is not a big deal. Ping we can do. So now what we will do, create a volume. Okay, volume, that is your choice. You want to make a volume of larger, approximately 10 GB. I have a snapshot of 2 GB, but if you want, you can create a volume of, let's create for 5. Okay, let's conduct this volume in AP South 1A. Tag you want to give, environment is testing. Let's create this volume, and now I'll going to attach this volume. So I'll go in volume sections. Okay, so okay. Sorry guys, we have created at a wrong place. Okay, we have to create this volume at Singapore, not here. Okay, because I want to because my another EC2 instance is running in Singapore. So what I will do, you see guys, copy image. Oh, sorry, copy here. So where you want to copy? So I want to copy this part in Asia Pacific, Singapore. So let me show you the Singapore regions snapshot. We don't have any snapshot as such here. देख सकते हैं आप यहाँ पे कोई snapshot नहीं है. So now I'll click here, okay, and I'll copy it. So now this operation has been started successfully, and if I do refresh, you will see guys, you are getting the volume here. See guys, you're getting the 2 GB volumes from Mumbai to Singapore. Okay. Vino, no? Because I am transferring Vino. It is not showing you like that it is coming from Mumbai. It will work on the IDs or numbers you can see. So
ग्लोबल बेस्ड नहीं, वो रीजन बेस्ड कि आपकी एक ही रीजन में काम करे। वो भी रीजन बेस्ड। सिक्योरिटी ग्रुप काम क्यों उठाता है? हाँ तो वो तो की पेयर होता है, दैट इज नॉट अ सिक्योरिटी ग्रुप। वो सिक्योरिटी ग्रुप फायरवॉल होता है। यू आर लिटिल बिट कंफ्यूज। फायरवॉल होता है आपका सिक्योरिटी ग्रुप, और जो की पेयर होता है वो सिक्योरिटी की होती है। वो सिर्फ मुंबई में काम करेगी और कहीं काम नहीं करेगी। So guys, we are getting a very high latency in Singapore. Otherwise, in almost 10 seconds, this snapshot should be created. But because of my internet, I guess it is taking some time. Okay, so let's refresh. We need to wait. Okay, so 100% we have created. You can see progress is 100%. Now I'll create a volume from this part. Okay, I'll create a volume of 5 GB here in AP South 1 East A. I hope that instance is running in AP South 1A. I don't know actually. So we have to make sure that instance is running in that region only. So I'll go on volume section. I'll attach this 5 GB. With this institute instance which is running. Let me click on attach. So guys, those who are taking online, this session is going to end in a minute. So please connect back with the same link again.